गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन इंडियन स्ट्रेटजी। आई एम गोना टॉक ऑफ दिस इंडियन स्ट्रेटजी with one underlying theme, and the underlying theme is do unto China what it does to USA. A normal quote is do do unto others what you expect others to do to you. So I've taken this do unto others what do unto China what it does to USA from that. ठीक, ये मैं क्यों ये सब्जेक्ट और ये इंडियन स्ट्रेटजी इस तरीके से लिया, क्योंकि दिस एनालिसिस ये एक एनालिटिकल डिस्कोर्स है जो आज हम आपसे बात करने वाले हैं, और वो काफी चीजों का मेल मिलन है। एक, चीन का अर्थव्यवस्था। दूसरा, इंडिया का राइज एंड इंडिया का बोलबाला। तीसरा, इंडिया और चाइना का जो संबंध है, जो इट्स गोइंग इनटू अननोन डायरेक्शंस जो पहले कभी नहीं थे, और इनका इक्वेशंस भी बदल रहे हैं। और ऑल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। इस माहौल में हमें एक नया स्ट्रेटजी चाहिए। वेयर डू यू गेट द स्ट्रेटजी फ्रॉम? बिकॉज आई डोंट सी दैट स्ट्रेटजी हैपनिंग। इट्स हैपनिंग इन पार्ट्स, कुछ हिस्सों में हो रहा है कि ये एक नया रवैया हमने अपनाया जी के तहत, पर क्या ये रवैया आगे किसे ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, वो मेरे को एक आर्टिकल में मिला जो चाइना और यूएसए के बारे में था। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें चाइना का जो रवैया है यूएसए के साथ, वो इट स्ट्रक मी एंड आई सेड लेट मी थिंक। ओके, हैविंग सेड दैट, इस मैं एक लास्ट में ऐसे एक स्लाइड नहीं दिखाने वाला हूं जहां हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। पूरे ये जितना विश्लेषण है उसके साथ साथ एक एक पॉइंट देता जाऊंगा, एंड अगर वो पॉइंटों के ऊपर एक्शन लिया जाए तो वो एक स्ट्रेटजी बन जाता है। So that is what I'm going to do, and we'll start first with the Chinese economy. जैसे आपको पता है, the last video I did on China, that is control of the public control of the private economy in China, का तकरीबन लास्ट स्लाइड में ये मैंने दिखाया था कि चाइना का इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, ये उभरेगा नहीं। देयर विल बी अ क्राइसिस इन परपेचुइटी फॉर द सिंपल रीजन, विश्वास चाइना के ऊपर घट गया, चाइना वाले झूठ बोलते हैं, और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो काफी इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है। तो बिकॉज ऑफ दिस दिस गोइंग टू बी अ क्राइसिस इन परपेचुइटी, एंड चाइना नीड्स रिकवरी, और रिकवरी के लिए इंडिया जरूरी है। इंडिया के बिना मेरे ख्याल में इनका रिकवरी मुश्किल होगा, इंडिया के साथ भी मुश्किल होगा, इंडिया के बिना में तो और भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, बट ये सोच सब कुछ इट गॉट ट्रिगर्ड व्हेन आई सॉ दिस आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है, इट हैज बीन रिटन बाय मिस्टर श्याम सरन, हु वाज आवर फॉरेन सेक्रेटरी, हमारा विदेश सचिव थे। ये गए हुए थे चाइना एक मीटिंग के लिए, वहां इनको कुछ वार्तालाप हुआ। All his observations and everything he's put in this article. So ये article is important. So I will first we'll go into the details of this article, और उसके बाद हम देखेंगे हर एक चीज क्या है। और इसमें इन्होंने अच्छी तरीके से ही इज एक्सप्लेन्ड कि चाइना का क्या रवैया है और उनका क्या पोजीशन है। So we need to read this in detail. So I will go over it. इसका एक सारांश बनाया हूं, ये हम पढ़ते हैं।
चाइना के हिसाब से द बॉर्डर इश्यूज शुड बी properly situated as it is only one component in the full range of relations. It should not be allowed to define the overall character. यानी कि इंडिया चाइना रिलेशन में बॉर्डर को अलग रखिए, बाकी आगे बढ़ाइए। और उनके मुताबिक बॉर्डर सिचुएशन स्टेबल है और वो कोई ऐसे दिखा नहीं रहे, देयर इज नो विलिंगनेस टू रिटर्न टू द स्टेटस को एंटी ऑफ जून 2020। और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि ये उतना आसानी से जाएंगे नहीं और कुछ ऐसे नजर भी नहीं आ रहा कि जाएंगे। उनका विचार ये है कि इंडिया हैज बीन निबलिंग अवे एट देयर टेरिटरी, कि हम उनके ऊपर अग्रसर हो रहे हैं। और उनका विचार ये भी है, इंडिया हैज पुट फॉरवर्ड एग्जैगरेटेड क्लेम्स इन द वेस्टर्न सेक्टर विच वुड कॉम्प्रोमाइज चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम्स। अगर वो मान जाए तो उनको घाटा होगा। और जो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, कि क्या एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें हम थोड़े देर में आगे देखेंगे इसके बारे में, कि इनके लिए क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। और मेरे हिसाब से वो ईस्टर्न लद्दाख है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये पूरा इनका जो बातचीत हुआ, तो श्याम शरण जी बोलते हैं कि देयर इज एन इम्प्लिसिट रिजेक्शन ऑफ द इंडियन पोजीशन दैट द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर इज अबनॉर्मल। हम बोलते हैं अबनॉर्मल है, वो बोलते हैं नॉर्मल है। अगर अबनॉर्मल नॉर्मल है तो ये बायलैटरल रिलेशंस क्यों एडवर्सली इफेक्ट होंगे? नॉर्मल है तो हम भी आगे बढ़ाएंगे, नॉर्मल नहीं है इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, श्याम सरन जी का सोच विचार ये है, नॉट क्लैरिफाइंग द एलएसी enables चाइना टू प्ले ऑन सपोज्ड एम्बिग्विटीज टू एनक्रोच अपॉन इंडियन हेल्ड टेरिटरी, राइट? कि अगर किसी को पता नहीं कि एलएसी कहाँ है, कि वो नाटक कर सकते हैं कि आपने हमारे इलाके में आ गए, पर हमें बड़ा क्लियर है कि एलएसी कहाँ है, हमारा विचार क्या है हमें क्लियर है, ठीक है ना? और ये भी बात है कि इंडियन एंड चाइनीज पेट्रोल्स आर एनकाउंटरिंग ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली इज इन एरियाज वेयर ओनली ओकेशनल पेट्रोल्स आर सीन। और ये इसीलिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साइड बढ़ गया, पेट्रोलिंग बढ़ गया, तो पेट्रोल क्लैशेस होने की संभावना है। Peace and tranquility agreements concluded earlier may not be updated, may need to be updated. ये भी सही उनका विश्लेषण है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 10-15 साल हमने पहले बनाया था, जब हालात बदल गए तब से, तो उनको अपडेट करने की जरूरत है। खास करके इन्होंने ये बताया है कि a former PLA officer conveyed that the Galwan clashes were not premeditated or planned but was an accident. कि उन्होंने ये प्लान नहीं किया कि अचानक हो गया ये। अगर ये अचानक हो गया तो वापस क्यों नहीं जा रहे हैं ये देमचौक में और देपसांग में? अगर एक्सीडेंट है तो मामला गहरा है। और उनका राय ये है, ये पीएलए ऑफिसर का, कि बोथ साइड शुड फाइंड अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द बॉर्डर प्रॉब्लम विदाउट लेटिंग स्पेसिफिक इश्यूज डिफाइन द ओवरऑल रिलेशनशिप। और ये जो बोल रहे हैं ये तो पहले भी बोल चुके हैं चाइना वाले, तो नया चीज क्या है इसमें? इसीलिए इन्होंने बोला इंडिया चाइना टाइज एट क्रॉस रोड, ऐसे मुकाम में खड़े हैं कि आगे कैसे जाना है। अगर आगे कैसे जाना कोई मुनासिब नहीं तो हमें एक नया स्ट्रेटेजी चाहिए, इसीलिए ये मैं पहल कर रहा हूं, समझिए। ओके, अभी हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, इनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, क्योंकि वो तो गायब ही है, वो किंग गैंग, ये पुराना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात किया, बैंगी, और उनका भी यही बोल है कि बायलैटरल रिलेशनशिप आगे बढ़ाइए और बॉर्डर को बीच में मत ले आइए। जो श्याम शरण जी को बताया गया ये भी बता रहे हैं। और इनका पोजीशन क्या है, राइट? उन्होंने ये बताया कि इंडिया को वापस, मतलब ईज रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइना का निवेश इंडिया में आना चाहिए, आने दीजिए। ओवरऑल बॉर्डर स्टैंड ऑफ शुड नॉट डिफाइन द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। वही बात जो वहां बताया गया यहीं भी बता रहे हैं कि बॉर्डर को अलग रखो और निवेश को अलग रखो। इंडिया शुड फोकस ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड मीट चाइना हाफ वे टू डिफ्यूज बॉर्डर टेंशन। ये हाफ वे क्या है? ये हाफ वे वो है कि वो चाइना के वे है।
जो भी चाइना बोलता है वो है हाफ वे, जो इंडिया बोलता है वो हाफ वे नहीं है उनके इनके मुताबिक। और यही बात जनरल केजे सिंह ने भी एक ट्वीट में लगाया आज, जो हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, और मैंने यही रिप्लाई दिया कि हाफ वे क्या है, फुल वे क्या है, हम आज बात करेंगे। यही बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, राइट। एक और बात यह है कि एज द वर्ल्ड, इनका बात, ये वैंगी का बात है ये, एज द वर्ल्ड टॉप टू डेवलपिंग इकोनॉमीज, अभी ये he has accepted that we are one of the top two developing economies with China and eternal neighbors. Common interests between China and India clearly outweigh their differences. कि हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है बहुत बड़ा है, डिफरेंस कम है। And achieving common development and prosperity is of global exemplary significance. तो बिल्कुल बड़ा इनका रवैया क्लियर है कि बॉर्डर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो बॉर्डर है स्टेबल है वही है, हमारा है, सब कुछ है, हाफ है, मतलब जो है वही है। हम हमें अब निवेश करने दीजिए वगैरह वगैरह, क्यों निवेश करना है वगैरह वगैरह, अभी आते हैं हम। ओके, इसके साथ साथ ये जो आर्टिकल मैंने पहले भी एक इसमें बताया, और ये दोबारा मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड दिस आर्टिकल इज बाय अ चैप कॉल्ड शी जियांगटाओ, sorry, by a chap called Shi Jiangtao. It came in China, South China Morning Post. He says India is tilting towards Washington. Has India's time over China come? ये बोल रहा है कि क्या इंडिया आगे बढ़ रहा है चाइना के ऊपर। पर इसमें बहुत चीजें हैं भाई, दो चीज इस आर्टिकल से मैं निकाल के आपके पास सामने ले आया हूं। मैं आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज रीड दिस आर्टिकल। मेन पॉइंट ये है कि देयर हैज बीन नो चाइनीज एम्बेसडर इन इंडिया सिंस अक्टूबर 22। जब से ये चला गया सुन विंग डोंग चाइना, टू सेशंस के बाद, नॉट टू सेशंस, वो पहले 20 पार्टी कांग्रेस के बाद कोई एम्बेसडर नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एम्बेसडर इन इंडिया, चाइनीज एम्बेसडर इंडिया, कोई बातचीत ही नहीं हो रहा है सही तरीके से। बातचीत हो रहा है जकार्ता में, चाइना में, इधर उधर, जो नॉर्मल कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है वो डाउन है। और ये बोलता है कि बोथ कंट्रीज एस्पायर टू बिकम अ रीजनल एंड इवन ग्लोबल सुपर पावर। ये पहली बार है कोई बोल रहा है कि इंडिया के बारे में ग्लोबल सुपर पावर करके जिक्र कर रहा है, वो भी चाइना से। एंड दिल्ली इज सेट टू बिकम राइज टू बिकम अ फोरमोस्ट जियोपॉलिटिकल राइवल। ये भी बात है कि दिल्ली, इंडिया और चाइना के बीच विल बी अ जियोपॉलिटिकल राइवलरी, फोरमोस्ट। इसका मतलब ये हमारा स्टार फॉर फ्रॉम राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू विल बी एट पार विद यूएसए। और ये बात जो मैं बार बार बताता आता हूं कि इंडिया इज नेक्स्ट टू ओनली यूएसए फॉर चाइना। अभी ये बात जो मैं पिछले एक साल से बोल रहा हूं अभी साबित हो रहा है। देयर इट इज कमिंग। Could this be a Thucydides trap between China, India in the making? Thucydides traps में क्या है? In the Thucydides trap, the the country which is rising poses a threat to the country which is risen, or the higher power. As a result, there is bound to be conflict between the two. Okay. So इसमें क्या है कि both are becoming regional and global superpowers, पर दोनों के बीच में राइवलरी होगा। और अगर आप वैंगी ने बोला, आप अगर उसमें देखोगे, top two developing countries, eternal neighbors with rivalry is not good for either China or India, हम मानते हैं। पर हाफ वे है, उसका हाफ वे है, हमारा हाफ वे नहीं है, राइट। कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया आउटवे डिफरेंसेस। इनका बोलबाला बड़ा क्लियर है कि दे वांट देयर वे एंड नॉट आवर वे। ओके, विल कम टू दैट आल्सो, राइट। Now there is already intense speculation and media reports coming out from China. और ये तो मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का इसीलिए लेता रहता हूँ, जो मैं बार बार बताता हूँ, बिकॉज इट गिव्स यू अ बैलेंस्ड थिंग। अगर आप ग्लोबल टाइम्स और पीपल्स डेली लोगे तो वो तो गाली देते रहते हैं, और वो नेगेटिव है, उसमें के ऊपर कोई विश्लेषण नहीं हो सकता, सिर्फ तू मैं हो सकता, मैं हो सकता है। ये बोलता है इंडिया चाइना रिलेशंस, मोदी जी सेट टू मीट,
मीट कहाँ करेंगे? G20 और ब्रिक्स समिट में. Will frosty ties toward this कि they are acknowledging that दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इंडिविजुअल रिलेशन भी ठीक नहीं है और दोनों देशों के बीच में भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है. अगर ये है, अगर ये हालत है, तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए? ओके, इसका पूरा सारांश क्या है ये पहले देखेंगे हम. इसका पूरा सारांश देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये भी मैंने पहले ये आर्टिकल दिखाया और इस आर्टिकल में बड़ा क्लियर है दैट चाइना नीड्स more all right, let me reiterate. In this article, it is very clear that China wants to enter India. He says protectionism not the answer for an Indian manufacturing sector in need of support and investment. So he feels in this article that India needs support and investment to grow, and that support and investment will come only from China. इसका ये है कि भाई आपका मार्केट खोल दीजिए. This is an economic extension of what has been said by Wang Yi. ये जो बोला है, ease restrictions on China's investment. और ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट वाला ये बोल रहा है, पर असलियत क्या है? असलियत जो मैंने लाल में लिखा है, मोर देन इंडिया नीडिंग सपोर्ट, इट इज चाइना विच नीड्स द मार्केट, इंडियन मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उसका अर्थव्यवस्था डाउन है और उभरने का चक्कर नहीं है. ये जो इनका अर्थव्यवस्था मैंने बड़ा विस्तार में पिछले 2 वीडियो में बताया. ये इसके बाद एक और वीडियो करूंगा जिसमें आजकल क्या हो रहा है, कुछ और करप्शन वगैरह हो रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा 2-3 दिन के बाद. बट लेट्स गो अहेड. अहेड में क्या है? चाइना क्या चाहता है? चाइना वांट्स इंडिया ऑन इट्स साइड. किसी तरीके से कॉर्ड को तोड़ दो, चाइना को साथ हो इंडिया, रशिया, चाइना, इंडिया और अगेंस्ट यूएसए. पर चाइना वांट्स इंडिया फॉर इट्स ओन रिकवरी. दूसरी बात, उसका अगर इकोनॉमिक रिकवरी होना है, इंडिया हैज टू बी बाय इट्स साइड. अगर इंडिया उसके साथ है तो तभी ये बैलेंस होगा. बट अगर इंडिया उसके साथ है, हमारा घाटा होगा, क्योंकि जो भी निवेश चाइना में से यहां आ रहा है वो बंद हो जाएगा. देखिए, ये बड़ा बारीकी चीज है. चाइना पर बात ये है, ये दोनों उनका रिक्वायरमेंट है. जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट उसका है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट उसका है. But despite that, China does not want to take a step back on its stand on the LAC. This is a dichotomy. If you want India to be with you, you have to give India some carrot. That China doesn't want to give. There are many reasons, but we'll talk of this a little later. China believes that its time has come as a superpower to lay down a Sino-centric world order. This is a larger belief. So it will not negotiate. So the question is, what is the game plan with India? What should India's strategy be? तो ये अगर ये 2 मुख्य चीज अगर हम आंसर कर सकते हैं कि उनका क्या रवैया है, उनका क्या गेम प्लान है और हमारा क्या नीति होना चाहिए, कूटनीति होना चाहिए, मामला क्लियर हो जाएगा. और ये अभी तक जो भी मैंने बात किया है, दिस इज सेटिंग द स्टेज फॉर आगे क्या बात करने वाला है. ओके, बॉर्डर डायनेमिक्स देख लीजिए. और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आवर स्ट्रेटजी एंड द वे वी डील विद चाइना इज डिपेंडेंट ऑन दीज 4 steps. So we'll see it a little closer. Over the past 60 years, China has shifted the goalposts. वही मैंने लाल में दिखाया है. और on the border dynamics. तो ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है 1962 में? सबसे ऊपर Aksai Chin and other areas have been occupied by China, right? हमें वापस लेना चाहिए, वो हमारा नेशनल एम है. उसके बाद 62 के लड़ाई के बाद हम we have gone on to LAC dispute. So the dispute is all about LAC and no more about regaining Aksai Chin.
We don't have a strategy to take back Aksai Chin. Our strategy has been only about the LAC disputes. Now, when in 2003, China put a claim on Arunachal Pradesh as South Tibet. So it shifted the goalpost again. So the LAC dispute has come to our side of the country, deeper into our country. Now in 2020, by encroachments and their aggression, and now continuing at Depsang and Demchok, and by creating those buffer zones there, they have shifted the goalpost further inside. तो आप देखिए कहाँ अक्साई चिन का आउटर बाउंड्री दैट इज कुनलुन माउंटेन्स से हम यहाँ आ गए डेप्सांग और देमचौक तक. आजकल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ऑल आवर टॉक इज टू रिस्टोर स्टेटस को एंटी पोस्ट ऑफ 2020. व्हाट अबाउट द अदर्स? आवर स्ट्रेटजी शुड बी टू प्लान फॉर अक्साई चिन. वो स्ट्रेटजी तो हमें नजर नहीं आ रहा. उसके लिए क्या करना है? I also agree that it is futile to talk of Aksai Chin at this stage when you don't even have, when you have going back. You need to get back. For the past 3 years, 2 years now, 3 years virtually, we are at the black step. How do we get back? How do we reverse this is the question. It's not going to be easy. And there's no guarantee that it will happen overnight. This is going to be a long haul. Like it happened with Guangdong, like it happened with Sangdrancho, it took 8 years, 9 years before we could get some parity there. Same thing will be here. But we need to change our strategy. Unless we change our strategy, we'll have it difficult. Okay, I have to go back in time and see what are the constants of India-China relationship, because our strategy has to come from how do the Chinese think on the long term. क्या उनका long term सोच विचार क्या है, वो पहले हम उसको हम विश्लेषण करेंगे. Right? इनका सोच ये है कि the balance of power is between China and the Soviet Union, now Russia, of course, and the USA. India is just a wild card to be kept in check. उसको दबा के रखो. China is the dominant Asian power without an equal. India has never been seen as an independent power, but always as an appendage to the great powers. कि इंडिया अपना कोई इंडिपेंडेंट रवैया नहीं है. वो हर वक्त या रशिया के पीछे लाइन बन होता है या यूएसए के पीछे. चाइना व्यूज इंडिया एज अनइक्वल एंड अनट्रस्टवर्दी. और ये 62 से पहले भी ये कम्युनिस्ट वाले सोचते हैं कि इंडिया कैन नॉट बी ट्रस्टेड. इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते. वो बात अलग है, हम भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते. पूरी दुनिया चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता. पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक एली टू कीप इंडिया इन चेक इन साउथ एशिया. वो हर वक्त तब से लेकर अभी तक 49 से लेकर आज तक पाकिस्तान इज देयर स्ट्रेटेजिक एलाई. इंडिया वाज नेवर सीन एज अ स्टैंड अलोन थ्रेट, जो पहले ही बता दिया. ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इंडिया मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड थ्रू परसुएशन और कोercion from time to time to keep it in check. बार बार इनको बताना पड़ेगा या इनके सर पर डंडा मारना पड़ेगा ताकि ये लाइन में बना रहे. और जब से जी जिनपिंग आया 2011-12 से यही इनका रवैया है. और एग्रेसिव बातचीत करो, अभी भी इनका यही है. परसुएड कर रहे हैं हमें कि पीछे जाओ, न्यूट्रलाइज करने के लिए. ये वेंगी का बात भी अभी जो हमने बोला यही कहानी है. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि द डील बिटवीन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारा स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर निर्भर है. हमारा जो स्ट्रेटेजी का मूल सिद्धांत, द फाउंडेशन ऑफ आवर स्ट्रेटेजी हैज टू बी ऑन दिस. एवरीथिंग यू डील विद चाइना हैज टू बी पॉलिटिकल. द मिलिट्री कम्स लेटर, but all of us look at the military first. How we tackle China politically is more important than how we tackle China militarily. This is something we have never understood.
I see that understanding with our prime finance minister. Our finance minister, he's talking in on those terms, right? He's understood it. But what about others? That's the first thing. So this is the first point of our strategy. Second point of our strategy, or rather, the second constant of our uh, relationship. CCP's narrative is of a righteous war to constantly remind Chinese people that it needs to put psychological pressure on India that China is the greater power. ये उनका कहानी है, ये उनके लोगों के साथ कि हम बड़े हैं, चाहे इंडिया छोटा है और इसको दबा के रखो. Next, the party is a resolute defender of their territory and Chinese interests, water and connectivity. ये दोनों चीजों के लिए चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइना का इलाका और इनका इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए वही है. Sincere attitude and generosity of China is seen as weakness by some Indian politicians. हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो धोखेबाज हैं और वो सोचते हैं कि चाइना को का जो वीकनेस है वो हम एक्सप्लॉइट करेंगे. Chinese scholars believe that Indian response to future military coercion will remain indefinitely low. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सोचते हैं कि अगर चाइना कोर्शन मिलिट्री कोर्शन करेगा, हमारा रेस्पॉन्स ढीला होगा. और ये हिस्टोरिकली करेक्ट रहा है. ये पहली बार हम अभी गलवान में और ईस्टर्न लद्दाख में हमने कुछ किया. इससे पहले 62 में हमने खास कुछ नहीं किया. 67 में हमने बहुत कुछ किया, पर वो हम भूल चुके हैं. इसीलिए मैं और जनरल कुलकर्णी हमने एक वीडियो जारी किया. आप कृपया इसको देखिए. 87 में भी हमने कुछ किया, पर हमारा कहानी नहीं है उसके बारे में. हमें किसी को पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं. इसीलिए हम सिर्फ 62 के बारे में सोच सकते हैं. 62 ही चाया रहता है और इसीलिए सब वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ वापस नहीं करेंगे. वही नहीं, हम भी यही सोचते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. और ये अभी डोकलाम में साबित हो गया और ईस्टर्न लद्दाख में साबित हो गया. हमारा ये वी शुड ब्रेक द कांस्टेंट. ये जो कांस्टेंट्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप तोड़ दो, कुछ नया करो, कुछ नया थ्रेट पोज करो. उनको पता होना चाहिए कि हम कुछ करेंगे. ये याद रखिए, चाइना रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ. Unless you're strong with China, China will not behave. China is 1 year back. चाइना का जो रवैया है, अभी का रवैया है, इसमें बदलाव है. बदलाव इसीलिए है because its economy is weakened, our economy has gone up, and our military infrastructure is coming. It sees India is gaining militarily. It also sees India gaining geopolitically. India is getting stronger. If it is getting stronger, it will respect us. And we should exercise this strength. It need not be a war, but we need to exercise this strength and convey this strength to China. Then you'll break this constant. That's important. Okay. What is the rationale of China initiating conflict in, with India? क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? कैसे करेंगे? ये थोड़ा सोचने वाली बात है. Chinese adventurism in the Indian Ocean or nibbling in disputed areas is what will be the norm. They can't fight. कोई पूरा लड़ाई नहीं कर सकते. ये चुटपुट करेंगे, ये होगा, सब कुछ छोटा मोटा होगा. एंड ईस्टर्न लद्दाख जो है इज मोस्ट क्रूशियल टू चाइना. तो ये थोड़ी देर में बताऊंगा. इनका मेन चीज ये है, इम्पोज रेपुटेशनल कॉस्ट ऑन इंडिया, इट्स मेन कॉम्पिटिटर इन एशिया. अगर हमारा रेपुटेशन खराब हो गया कि सब बोलेंगे यार ये तो बड़ा वीक कंट्री है, अगर हम सब सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो जीत गया. और वो एक्शन वही होगा कैलिब्रेटेड, हमें नीचे दिखाने के लिए.
एक और है इनका प्यूरिटिव आउटलुक, वो भी हो सकता है इनका. देयर थिंकिंग इज 1962 वॉर bought decades of peace for China. They feel military coercion works better in forcing India to cooperate than dialogue. कि इनके साथ थोड़ा बहुत लड़ाई करो फिर कोऑपरेट करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा ये. हेंस एग्रेशन इज पार्ट ऑफ दैट रीजनिंग. ये अगर एग्रेशन दिखा रहे हैं तो ये सोचते हैं कि इनको दबा दो फौज के साथ, ये मान जाएंगे. एक और बात है, ये यकीन करेंगे जब भी हमारे साथ अग्रसर बन के आएंगे, इट विल एंश्योर कि यूएस एंड allies cannot engage China through Taiwan. They will never get into a two-front situation. चाइना यकीन करेगा कि अगर ताइवान की ओर जाए तो हमारे साथ सलूक करेगा, अगर हमारे सामने आना है तो वहां सलूक करेगा. ये 1962 में भी हुआ है, 2020 में भी हुआ है. और हमारा स्ट्रेटेजी बिल्कुल इसके विपरीत होना चाहिए. हमें यकीन करना चाहिए अगर हमारी ओर बढ़े तो वो ताइवान के साथ, ताइवान के सामने या इंडो पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी में कुछ हो. अगर वहां कुछ हो, यहां भी कुछ शुरू करो. अगर ये दोनों तरफ चाइना को अगर आप दबाओगे नहीं, वो आपको दबाएगा. तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्वाड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. द चैलेंज बिफोर इंडिया is how do you make Quad more potent than what it is and take it into the military realm? Because that is your core element of your strategy. And this is something which people have not spoken, but I am speaking. Okay. The next. What is the geopolitical logic of China? And why is China aggressive? इसका आंसर हमें मिलना चाहिए. Historically, there has been a low geopolitical cost for China for its use of coercion against India. इन्होंने 62 में किया, किसी ने कुछ नहीं बोला. 67 में ट्राई किया, किसी ने कुछ नहीं बोला. 87 में ट्राई किया, किसी ने कुछ नहीं बोला. डोकलम के पास 2017 में ट्राई किया, किसी ने कुछ नहीं बोला. और 2020 में भी किसी ने कुछ नहीं बोला. So there are no costs on China for doing whatever they do. And the logic is also that United States is not likely to get directly involved military in a India-China dispute. ये इनका logic है ये. And USSR will or cannot take sides against China. USSR के बदले आप रशिया लगा दीजिए आज के दिन. ये तो बड़ा क्लियर है. रशिया हमारे ये अगर आप देखोगे, रशिया will never side India against China. और अभी where Russia and China are really partners and Russia is a junior partner. We have to impose costs on China. कीमत अदा कीजिए. अगर चाइना कुछ करता है उसको कीमत होना चाहिए. वो कीमत क्या है हमें डिसाइड करने की जरूरत है. कुछ हद तक ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि हम उनको निवेश करने नहीं दे रहे हैं. इकोनॉमिक कीमत हम इंपोज कर रहे हैं. यांगजी में थोड़ा मिलिट्री कीमत भी हमने इंपोज कर दिया है. ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं. पर हमें ये स्ट्रेटेजी अपनाना होगा और उनको बताना होगा कि भैया हम ये करेंगे आपके साथ. ये जरूरी नहीं है कि व्हाइट पेपर निकालो और ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाओ. चाइना को चाइना के भाषा में ही समझाना पड़ेगा. और हमारा प्रधानमंत्री तो इसमें अच्छा व्यवहार कर ही रहे हैं. उन्होंने अभी भी ब्रिक्स के समिट में उन्होंने का साफ इनकार कर दिया बीआरआई का. और इंडिया ने ये भी बोल दिया कि आपका जो श्रद्धांजलि है, जो उनका फाइनल स्टेटमेंट में, हम उनको नकार कर दिया क्योंकि वो चाइना वाला डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का शब्द और फ्रेजेस लाना चाहते थे. वी हैव सेड नो. सो वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड imposing costs, but we need to do more. We need to do more in a calibrated manner. We have to make China change its position on the LAC. वो steps में it has to be calibrated कि
अगर वो पीछे हटेंगे तो क्या मिलेगा उनको, अगर और पीछे हटेंगे क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा. The cost of each step of backward step by China and the normalization they can expect from India has to be conveyed to them. भाई अगर आप 10 पैसे दे रहे हो तो आपको 10 पैसे के ही आपको चीज मिलेगा, ये उनको पता होना चाहिए. उनका देर ग्रीडी, वो चाहते हैं कि 1 रुपए दे दो और 100 रुपए का सामान ले जाओ. वो नहीं, निवेश तो बिल्कुल बंद करो. ओके, हम अभी बात करते हैं ईस्टर्न लद्दाख के बारे में. 1962 और उस तब तक ईस्टर्न लद्दाख अक्साई चीन हाईवे इंपॉर्टेंट है. पर अभी क्या है, आर्टिकल 370 जो आपने रद्द कर दिया, और ये डीएसडी जो रोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गए चाइना के लिए. ये मेरे को कोई डाउट नहीं है. क्यों? आप देखिए इसमें ये जो नीचे डीएसडी रोड जहां मैंने ब्लू इसमें लिखा है, वो अक्साई चीन के पास जाता है. अगर वो डीएसडी रोड जो आ गया है, वो सीधा हमें कोराकोरम पास तक लेके जाता है. वहां जो सीपीसी जो ऊपर पीओके के अंदर जाता है, उसके ऊपर इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट. जब हमने 370 रद्द किया था, वी ऑल्सो स्पोक कि भाई अक्साई चीन इज इम्प्लिसिट, कि अक्साई चीन हमारा है. इन अ वे ये जो लास्ट सीडी जो इसमें मैंने दिखाया था, ये 370 में लागू है. ऐसी बात नहीं है, यही बोलता हूँ, हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं. अक्साई चीन और ऊपर का वी शुड बी प्लानिंग फॉर दिस. ये 370 आर्टिकल जब हमने रद्द किया था, ये इसके ऊपर चोट लगा उनको, और हमने जंप किया 3 सीढ़ी, और इसीलिए उनका रिएक्शन ऐसे इतना संगीन था, और ये अटैक करने आए. और ये जब रोड चला जाएगा, ये रोड ये मैप में गायब हो गया है, तो not only do we threaten CPEC, but you're threatening that area of Xinjiang, which is critical to them, and the area of Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan. So this criticality is something which has shaken them, and that is why they are trying to put us on the back foot at Depsang and Demchok, and they'll never get out of that unless we leverage them out. You have to leverage them. एंड वी नीड टू हैव अ कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी. एंड ये जो स्ट्रेटजी है, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी होना चाहिए. सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी से नहीं बनेगा. यू नीड टू हैव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, यू नीड टू हैव अ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, you need to have a military strategy, you need to have a worldwide strategy, international strategy. You also need to have a strategy against Pakistan. पाकिस्तान इनका पंजा है, उसको तोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कैसे तोड़ना वो अलग बात है. लड़ाई इज नॉट द ओनली आंसर. दैट्स ऑल्सो समथिंग विच आई मस्ट टेल यू. ओके, व्हाट इज द चाइनीज डिस्कोर्स ऑन इंडिया? इनके 3 सोच है. एक है हाइपर नेशनलिस्ट स्कूल. ये जो है, मैंने ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब के साथ आपके साथ बात किया था उस वक्त. देयर इज अ हाइपर नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ टीच इंडिया लेसन. पहले ऑप्शन ये है. सेकंड है, इफ उनका सोच ये है कि इफ चाइना वांट्स टू डील विद द यूएस चैलेंज, इट नीड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द इंडियन फ्रंट, व्हिच इज सेकेंडरी. अगर आप चाइना के साथ लड़ना है हमें, इनका सोच है कि इंडिया के साथ सुलूक कर लो, इंडिया का बॉर्डर सॉर्ट आउट कर लो, रिजॉल्व बाउंड्री इशू एंड फोकस ऑन चाइना. इनका दूसरा सोच है. पर एक तीसरा सोच है, ये रैशनलिस्ट स्कूल है. ये सोचते हैं कि बिलीव द रैशनलिस्ट स्कूल बिलीव्स टीच इंडिया लेसन इज शॉर्ट साइटेड, कि ये भाई ये ठीक चलेगा नहीं. रिलेशंस विद इंडिया सेकंड ओनली टू द यूएस, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं इस आज के सेशन में, is second only to the US. Decoupling would strengthen anti-China alliance in Asia. Best strategy is to buy time, समय काटो, while continuously maintaining pressure and seeking bilateral cooperation. यही कर रहे हैं ये. हमारे ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं एलएसी के ऊपर, और bilateral cooperation भी they are seeking. So China is very clearly operating from the rationalist school, and this is something which is very important, that they are operating from
a very clear strategy as to what they want to do with India. Okay, so what is this final? इसका संक्षिप्त रूप में अगर हम बात करेंगे तो क्या है? No tangible benefit of giving up leverage over India. ये LAC के ऊपर leverage रखेंगे. Continue to maintain psychological pressure to force India to protect LAC, divert it from the Indian Ocean region and enter the Indian Ocean region. Seek Indian neutrality in US-China strategic competition. Hence, trade and engagement. ये सब बोल रहे हैं आज पहले फर्स्ट 15 मिनट्स जो मैंने बोला यही है. Resolution of border conflict will open doors for much deeper alignment with the US. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बॉर्डर का कल सुलह हो गया तो इंडिया जाके चाइना यूएसए के गोद में बैठ जाएगा और अगेंस्ट चाइना हो जाएगा. तो बॉर्डर को सॉल्व मत करो. एक्सप्लॉइट सोशियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस. इंडिया का सोशियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट कीजिए और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अभी जैसे मणिपुर खुला हुआ है, दे विल एक्सप्लॉइट. इनका स्ट्रेटेजी है ये. एक घंटे के बाद मैं जयपुर डायलॉग में मणिपुर के बारे में ही बात करने जा रहा हूं. आप आइए उधर भी शारिक होके बात सुन लीजिए मणिपुर के बारे में. दे विल यूज इट. कोल्यूसिव पार्टनरशिप विद पाकिस्तान ये तो है ही. एंड स्ट्रेंथन रीजनल लिंकेजेस. हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के ऊपर ये ध्यान रखें. इनका स्ट्रेटेजी है. हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? प्ले द बैलेंस ऑफ पावर गेम. ये बैलेंस ऑफ पावर मैट्रिक्स के बारे में हमने 6 वीडियो किया है. अब देख लीजिए इनको. मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा. आज के दिन इस पावर मैट्रिक्स में रशिया इज बिकम वीक. चाइना इज ऑल्सो वीक बिकॉज ऑफ इट्स वीकनिंग इकोनॉमी एंड इट्स वीकनिंग डेमोग्राफी. इसका फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग नहीं है, पर ये सोचते हैं वो स्ट्रांग है. दे वांट टू ओवरटेक इट थ्रू मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी, जो मैं पिछले 2 वीडियो में बताया हूं. व्हाट शुड इंडिया डू? इंडिया शुड स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप with the US, which we are doing already, and we need to do it meaningfully. How to convert this into reality, इसके बारे में भी मैंने 3-4 वीडियो कर चुका हूं. इसका मैं आउट भी कर रहा हूं दोबारा. 3-4 वीडियो हाउ टू कन्वर्ट. वन आई डिड विद जनरल दुआ एंड वन आई डिड विद जनरल नारायणन. देख लीजिए. एंड वी ऑल्सो हैव टू लीवरेज आवर लिंकेजेस विद द क्वाड, एशियान, साउथ एशिया, अफ्रीकन यूनियन, जिसके बारे में वो एम्बेसडर गुरजीत सिंह साहब के साथ हमने बात किया. फ्रांस एंड EU. फ्रांस इज इंपॉर्टेंट. So we have to have this balance of power game. पहले हम swing power थे, आजकल हम balancing power है. We have to start this in a big way. China should know कि our strength is improving day to day geopolitically. And when our strength increases geopolitically, theirs will reduce. It's a zero-sum game. एक किसी का ऊपर उठ गया तो नीचे डाउन होगा. अगर ये हम सोचते रहेंगे कि उनका इकोनॉमी 5 गुना बहुत है, ये तो हम सोचते ही रहेंगे. इसके बारे में भी आगे बताऊंगा मैं. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बड़ा, राइट, व्हिच आई सॉ इन फॉरेन पॉलिसी. एंड व्हाट इज दिस आर्टिकल ऑल अबाउट? दिस आर्टिकल इज अबाउट व्हाई चाइना वोंट टॉक विद अमेरिका's military. This is by Yun Sen, who's a Chinese who's in Stimson Center, and she's written this article. So, what does it say? Main, I'll read it out. China believes that silence is a form of leverage. क्योंकि आजकल चाइना और यूएसए के बीच में कटपिट तो हो रहा है. USA is trying to speak to China, and China is not getting to speak to USA on a military to military talks. Trade talks हो गए, the foreign secretary level talks हो गए, but the defense ministers have not spoken, and China is refusing. So China believes that silence is a form of leverage. Washington is concerned about lack of contact. China likes that the US military to feel uneasy. So if the US military feels uneasy that China is quiet, we should make China feel uneasy that India is quiet. Very simple.
wants Washington to worry about China's provocative military acts, to ask for reassurance and then not receive it. Give it to them. जो हमारा मिलिट्री पोस्चर और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है वो पूरा इसी में है. चाइना का जो रवैया है, अगर आप कुछ भी अपनाओगे तो दे आर इन प्रॉब्लम्स. Uncertainty puts pressure to decrease the United States military footprints in the water and airspace near China. Okay, now let me just reframe this sentence. Yeah. Uncertainty puts pressure to decrease the Chinese military footprints in the waters and airspace near India. If you are uncertain, China will be troublesome. So if you just flip, it is there. In China's view, an open line of communication on military matters abets Washington's behavior. It absolutely, देखिए, within China, there is an increasingly popular, if fatalistic, view that a military crisis may be inevitable and perhaps even desirable. This is something which we don't have to get into, but we can calibrate our strategy. Washington could instead give in to some of Beijing's demands in exchange for better lines of communication. So he says right? But that would reward China's dangerous posturing. China's diminishing aversion to risk is alarming. Beijing may see its strategy as a low risk and high reward. So this is what China is doing to USA. So that's where my thing is, do unto China what it does to USA. See the logic. And correlated with the points which I've said everywhere. Change the constants. View everything politically. Don't step back. Look at those steps and factor all these in. Right. You have to have an internal strategy where you have to develop your economy holistically, develop your military capability, to increase your diplomatic footprint, along with the other strategy which I said, balance of power strategy. वो जो balance of power strategy जो मैंने पहले बताया आपको, ये और ये internal strategy जो मैंने अभी बताया है, important. Regional strategy होना चाहिए. Okay. One of my last points. There is something called a displacement anxiety paradigm. What is this displacement anxiety paradigm? ये actually अगर आप देखेंगे तो displacement anxiety paradigm is today existing between China and USA. What is this? China feels it has caused an anxiety in USA by trying to displace it from the number one position. Right? That's the displacement anxiety. But you've seen आज के दिन जिस तरीके से China is reaching out to us and coming, there's an anxiety in China that it will get displaced by India. And for a long time, for the past 75 years, we've had an anxiety on Pakistan, that Pakistan will cause us harm. So Pakistan is causing you displacement anxiety. You are causing displacement anxiety to China, and China is causing displacement anxiety to USA. And there's a downward pressure from the top. USA is debauing China, China is debauing India, India is debauing Pakistan. ये हो रहा है आज के दिन. How do you use this? And this is the important thing which I thought I'll put across to all of you. Why? It is very simple. The opportunity is now. The displacement anxiety between Pakistan and India is almost minimal. It's almost non-existent because of Pakistan's internal problems. The displacement anxiety जो हम cause कर रहे हैं China को is increasing by the day. सब बोलते हैं कि आपका इकोनॉमी सिर्फ $4 ट्रिलियन है, उनका $17 ट्रिलियन है. ये मैं मानता नहीं हूँ. पाकिस्तान का क्या इकोनॉमी है? उनको कोई इकोनॉमी ही नहीं है, but it still causes you displacement anxiety.
some anxiety it costs you. उसी तरीके से you are good enough to cause that anxiety to China. इसीलिए तो इतना बात कर रहे हैं वो. कोई बेवकूफ होगा जो बोलेगा कि चाइना इज नॉट वरीड अबाउट इंडिया. और प्रोपेगेंडा मत कीजिए कि हम वी कैन नॉट कम्पीट. राइट. सिमिलरली with China to USA, it is maximum, but it is receding. That displacement anxiety in the past 1 year has started receding in USA. आज के दिन आप देख रहे हो कि there is more clarity of thought and more confidence in USA in dealing with China. And China is not that confident. China is neither confident about USA or nor India. So that is where this relationship between India and USA is all the more important, because you can actually, between the two of us, put China on the horns of a dilemma, which it is. Right? So that brings me to the last slide. For all this, you have to start with politico-military fusion. अगर ये स्ट्रेटजी अपनाना है तो आपको नया सिविल और मिलिट्री इक्वेशंस की जरूरत है. और ये चीज 3 दिन के बाद जनरल प्रकाश मेनन के साथ मैं बात करने वाला हूं. जनरल प्रकाश मेनन जो है वो एनडीसी के कमांडेंट रह चुके हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मिलिट्री एडवाइजर थे. राइट. और वो आजकल तक्षशिला इंस्टीट्यूट में है. एंड 3 दिन के बाद या 2 दिन 26 तारीख को आई एम गोइंग टू टॉक ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस विद हिम एंड ऑफ कोर्स सिविल मिलिट्री फ्यूजन. तो ये है आज का लंबा चौड़ा विश्लेषण ऑन इंडियन स्ट्रेटजी डू unto China what it does to USA. I will now take on questions. And I will not take on all questions. I'll take on those questions, some which are thing. I see Joydeep Mitra saying amazing analysis, just unbelievable. I agree with you, Joydeep. It's time we started thinking differently. Whether it's unbelievable or amazing is not the point. My requirement is, please tell everyone we have to start thinking differently. I want more people to join Gunnershot and think like me. I want to think better. Okay, now let me see some good questions. I will only take on good questions. I will not take on all questions. Yeah, we have not. Okay, I'll talk. This is a fairly interesting. Should India ban all Chinese brands in India? Is it feasible? I don't think that's the idea. We should ban those things from China which are strategic in nature. आम ट्रेड चलने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. We should not ban all brands, right? And it is also not good because unless you have a substitute for that, you shouldn't do it. Okay, so we have to be calibrated of how to deal with China. Already we have put a cap on it. You have to slowly reduce that threshold. Okay, Suren says it feels like China is advising India to follow a peaceful means to promote trade with India while can do what they want. This is absurd. India will never become Pakistan. We don't want to become a Pakistan for China. We want to become something more. Okay. You have not understood, Suren. Unfortunately, don't come to me with hackneyed ideas. Please come to me with some thinking thing. Okay. Okay. Right. Yeah. Pranjal, Goyal, Namaste, General Shankarji, another great subject. Thanks for me. Yeah, thanks a lot. I need more people to think of it. China has no capabilities of fighting actual war. They fight war by playing strategies. I agree, but we should not underestimate their capability to undertake military operations. China is someone whom we should never trust. No one trusts China. I just okay, let me give you a thing. I have a friend in New York.
He is an international investment banker and advisor. So he just gave me a message to say that he has a friend who went by Ray Dalio's advice and invested in China and lost money. And Ray Dalio is a guy who propagates for China and stocks. ये वो बड़ा सोच विचार है. People who believed China have lost money. Well, right? So that's it. And but I generally agree with what Vijay says, but we need to be a little careful in what we have to say. Uh, Sarika Jain, probably the first time she's coming. India should show its geopolitical strategy against China as supporting Taiwan's sovereignty as priority in its foreign policy. I agree with you completely, but the problem in this, Sarika, is that is Taiwan ready to get to sovereignty? Is it the right time? So we'll have to see. We'll have to play this very carefully. Okay. Rightly said, not much is disseminated about the 1987 Arunachal Pradesh conflict. It has been reported as a standoff with a low-key reported in most areas. We have come to know its details. Yeah, through your presentation, I would request everyone to go through this. If you see the 1967 operations, if you see the 1987 operations, and if you see the 2020 operations and Doklam, you have a military strategy in place to defeat China. And that is something which I'm going to do. What did we do and what are the things which we did in 62? What did we do in 87? What did we do in 2017? And what did we do in 2020? If you put all this together, you have a clear military strategy and a possibility, if you think well, how you can handle China. I'll do that. Yeah, Khalil Nabi is quite anti-India. I understand he must not be from our country also. So it's okay. Even if he's from our country, it doesn't matter. But from my thing, he seems to be from a foreign country. He can have his choice. That's okay. Tibetan freedom should be included. I completely agree with you, Sarika. Knowledge is power. Born free, you said something very significant. And this channel is all about knowledge. I'm trying to build knowledge about China. I'm trying to build knowledge about India to all of you and gain knowledge from all of you. All right. So I would request, please ask your friends to come join me. Okay. Uh, right. Oh, congratulations for an outstanding presentation. I put it up because the second part is important. It is a refreshingly new line of thinking that was brought out through this presentation. We have been doing something again and again, again and again. वही हम करते आ रहे हैं और हमें कोई सफलता नहीं मिला. अगर वही चीज अगर हम करते रहेंगे ना सफलता मिलेगा. You cannot keep reinforcing failure. You have to think something different. You have to do something out of the box. I'm not saying something out of the box. I am saying something from within the box, but different and with logic and calibrated. And you have to see in the future, not only in the back. That's the point. Waiting for your presentation on Manipur. Yeah, please go ahead. What would be your main appeal? Yeah, I will see that. Wait, you heard about it tomorrow. So you go wait till tomorrow. I mean, you heard about it yesterday. Wait for another 1 hour, we'll say. China is making number 120 numbers per year, J20. See, again, यही बात है, Robert G. I am not talking of military equations and militarily we can handle China. Let's be very clear. China can't handle India. It can make anything it wants. Okay? And that's known. So those of you who want to take me at my value, fine. Otherwise, number game खेलते रहो. नंबर में ना आप लिखते रहो और होता रहेगा. याद रखो, तालिबान के पास कुछ नहीं था. उन्होंने चाइना को, अमेरिका को मात दे दिया.
यूक्रेन के पास कुछ नहीं है, वो चाइना को रशिया को लटका के रखे. And because of that, China is thinking 100 times even to go across to small Taiwan. You think they'll come against India? Just forget it. Robert, please think differently. Don't go by numbers. Okay. Indian establishment is not very assertive on the media and PR when it comes to China. The China's always perceive silence as weakness. Wonder when this will change. I don't think it is exactly correct. I have told you that what all Indian media, India is doing, and China is getting the message. See, I have not shown you one headline from Indian media. I have shown you headlines from them. How are they perceiving? What is their view? See, if you see, I don't go by what our media says at all because our media is quite immature. Barring a few people, they don't analyze. I go by what their experts and their opinion makers say so that we understand that their thinking. And their thinking is that India is a competitor. Their thinking is that India is going to be a global power. As they have said, Wang Yi has said it's going to be the two top powers of this area and developing and all that. So we go by what they say. Yeah. In your opinion, how aware are about our policymakers about what you have spoken today? They're quite aware. Let's be as clear. Don't ever think poorly about our policymakers. They're as good or better than me. I would like to think that they're better than me. Yeah. Why am I talking all this? I'm talking all this because public has to support them. Unless you people start supporting our policymakers, how will they do anything? All of you have to have that belief that they will do it. We are doing it. That is why they are worried. That is why China is worried. Have we done enough? We have not done enough. We have to do more. Are we trying to do more? We are trying to do more. Okay. In all my discussions with everyone, this is the thing which comes out in gunner shot. And what is the difference between gunner shot and any other channel? Then look, no other channel is a patch to gunner shot in India. I can say it with a lot of pride. Because we think differently in gunner shot. Why did Henry Kissinger go to Beijing? Well, it'll come out. At this point of time, I wouldn't know. And Henry Kissinger is no great fake as far as I'm concerned. He's a mass murderer. But I don't think Biden administration needs Henry Kissinger. There's a deeper game which will come out. It's possible that China wanted him there to convey a message back to things. So let us see. Mandeep Arya, you have heard about my overall national strategy. What should India's military strategy be? I told you, I will tell you. Be patient. I will stitch all those four together and give you. Okay? Right. And should we again, Mandeep Arya, you have come to this channel for the first time and you're asking the old questions. I have gone beyond all this. Please see my expositions on multi-domain warfare. You are out of equation from me at this point. My request to all of you is please, अब अगर आप हमारे चैनल पे आते हो, आप थोड़ा संयम रखिए इससे पहले कि आप सवाल पूछ लो. एक दो बार हमें सुनिए, हम किस तरीके से बात करते हैं. ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर के बारे में मैं 4 साल पहले एक पेपर लिख चुका हूं, जो बहुत लोगों ने लिया है और उसके बारे में आज मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे सलाह ले रहे हैं. तो अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ आके बोलूंगा नहीं नहीं सिर्फ चाइना के साथ मिलिट्री डोमेन में बात करो, तो फिर यूर आउट ऑफ द इक्वेशन, राइट? सो या ओके. No, China is not doing any salami slicing at this point. When it does, they should get a military reply. They will get you again. Please stop looking completely behind. See what is ahead. Yeah. Always look forward to your videos. Thank you. One of the best on geopolitics and all ongoing happenings. Thank you. Thanks a lot, Sen Gupta.
Right. Also, a follow-up question: are we capitalizing decoupling of China? As I hear, Veer Raghavan, it's like this. Initially, Vietnam has got whatever it has to get, and Indonesia, Bangladesh, and all, they all, some relocation has happened, but they're all up to a limit. Anything hereafter which has to happen, de-risking or decoupling from China has to come into India, and the big ticket players will come to India. Don't worry. Yeah, yeah, Shah. Political and financial condition of Pakistan may lead to problems of India. Which are they? We are talking of China and you're talking of Pakistan. Either you're from Pakistan or you're Pakistan fixated. One of the two. Okay. So please be to the context. Yeah, we are going to win everywhere. Remember, Indian Army has won all wars, World War One and Two. Only one exception is, yeah, I agree with you. Except 62, we are all fine, right? Uh, China will continue to be in perpetual motion as long as externally force is applied to it. I think you made a very prudent statement, Karthik. They are in a state of inertia. So far, that state of inertia was that external force was applied and they continued to have a momentum. That external force is going away. When that external force is going away, their inertia is going to change. They're going to change their state of inertia. And they're going to change to that state, a lower state of inertia. And that's what's going to hurt them. And it's going to happen. Uh, what is the timeline we are looking before any misadventure from China? I don't think there'll be any misadventure from China. And I don't want to put a timeline. We need to have a balance. देखिए बैलेंस ऑफ पावर गेम में लड़ाई नहीं होता. Balance of power game में you balance power, you deter each other from fighting, right? So that is the way one has to look at it. So there's no ladai. I don't think China is foolish enough to get into a war with India, because what has Ukraine-Russia war taught China? That it is easy to get into a war, but what is the exit? If you cannot get out of the war, you're finished. Right. I come to the end. I've answered almost everyone's questions, or at least one question per head I have taken. Thanks a lot for your patient listening, and so many people have come and heard. If you have liked this video, please press that bell icon, and also on this thing or other videos. Please subscribe to Gunner Shot, and also please join me as a member, right? I need to, like I said, from next month onwards, I want to start giving some Gurdana to people who come on this channel, right? Right now, I don't have the capability to give them anything, but I'll start with whatever it is. Thank you. Thanks a lot to everyone. It was great to speak to all of you. Thanks for your patience. Good night and Jai Hind. 1 hour later, 10 o'clock, I'm starting off on Jaipur Dialogues with Manipur.